Namaskar. We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society at milestone of 2187. Thank you very much for joining. I would like to welcome Dr. Suhas Sethi after a long time, Dr. Nishan Suklaji, and our Dr. Vishnu Prasad Sharma ji. I welcome Melinda Caron also. Welcome, Melinda ji. Without wasting much time, I would like to request Dr. Vishnu Prasad Sharma sir for his welcome address. हाँ, नमस्कार. Good evening to everybody. Hari Om. Respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to AYUSH SAMRIDDHI International Webinar Series on Dissociative Identity Disorder. Most important subject today we have. In this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Professor Suhas Kumar Sethi, Principal and Director, CAHERS, Sri B.M. Kaka Kanwadi Ayurveda Mahavidyalaya, Belagavi. Namaskar, sir, and welcome you to this Ayush Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. Nishant Shukla from Jamnagar. Namaskar, sir, and welcome you to this Ayush Samriddhi webinar. Once again, I welcome all the eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this Ayush Samriddhi International webinar series on dissociative identity disorder. सबको स्वागत करते हो. नमस्कार. Over to Pawan ji. Thank you very much, sir. Now I would like to request Dr. Suhas Sethi ji to enlighten us on the subject. Dr. Suhas Sethi ji, please. Thank you, sir. Thank you very much, Pawan Sharma ji, for all the wonderful work that you have been doing. And it's always a great honor and privilege to be a part of AYUSH Samriddhi International Webinar Series. I'm very happy that today we are a part of more than 2187th episode of this marathon race, which was only possible by the constant efforts by Pawan Sharma and his entire team, who have taken countless efforts without missing a single day. They have been doing this wonderful efforts. I'm very happy that this is real motivation for the young generation to learn various upcoming important concepts related with Ayurveda and other allied topics. And today we have a very interesting topic which is generally not given much importance in the clinical practice of Ayurveda. I'm very happy to be a part of today's webinar series, and I'll be very happy to share few of the basic concepts of the dissociative identity disorders and how in Ayurveda, in the clinical practice, we approach such patients and what is the potential of Ayurveda in managing various such disorders. So I think without wasting much time, once again, my heartfelt pranams to Pawan Sharma sir and all the eminent Gurujis, my co-speaker Nishant Shukla ji, the senior teacher Vishnu Prasad Sharma ji, and all who have joined us from various parts of the world for today's webinar series.
Sharma sir, the slides are visible? Yes, yes. Yes. So, the topic for today's discussion, as we have been focusing, is the dissociative identity disorders. Probably, this is also very well popularly known as multiple personality disorders, and we all might have watched various Bollywood and Hollywood movies which depicted the multiple personality disorders. So where they take up different personalities and probably try to behave involuntarily in terms of different personalities. So with this background of probably seeing so many such characters in various Hollywood and Bollywood movies, let's say why people have such issues, what are the possible common symptoms they suffer with, and what are the various treatment options that we have in the area of Ayurveda. So to outline the today's topic, we'll be discussing about the overview of dissociative identity disorders, its fundamental basic diagnosis, the possible cause of the dissociative personality as well as identity disorders, and what are the common signs and symptoms of the DID, what is a possible mechanism why people suffer, and most importantly, what are the possible management strategies that we can apply in dissociative identity disorders. So before we go into the dissociative identity disorders, let's understand a bit about the dissociation. The dissociation is an experience in which there is a discontinuation or discontinuity in the conscious awareness. Like suppose we always have the awareness, but suppose there is a disruption or discontinuity in this awareness, we call it as dissociation. And this occurs where or when there is a disconnection in the usually integrated functions of consciousness, memory, perception, emotion, actions, identity, body representation, and the body control. There are various common types of dissociative experiences that we come across in the clinical practice, like depersonalization, derealization, dissociative amnesia, identity confusion, or alteration. Let's see what these terms one by one, starting with depersonalization. Experience of unreality, detachment, or being an outsider observer with respect to one's thought, feelings, sensation, etc. Like he just tries to observe from outside about the things that is being happening within himself. Derealization is an experience of unreality or detachment with respect to the surroundings, where the individual looks outside as a very unusual, like a dream-like or usually distorted experiences. The dissociative amnesia is inability to recall important personal information, even if they ask their phone numbers, address, or their qualification, their spouse name. Sometimes they try to forget for a transient period of time. And identity confusion, alteration, for example, many times they enjoy the different activities and suddenly they forget that they have really undergone these activities. So basically, this happens with a positive and negative dissociative symptoms. Like the positive symptoms includes the addition of an experience not typically there, whereas the negative symptoms is where there is a lack of a typical experience. So it's like the same thing that we come across in schizophrenia and other psychotic disorders where there is positive symptoms as well as the negative symptoms. Both of them is also seen in case of a dissociative symptoms. So as you know that dissociation occurs on a continuum
And a common dissociation like could be daydreaming, feeling detached, feeling track of time, losing the track of time, feeling emotionally numb, etc. So it can also typically present for various derealization, depersonalization, amnesia, etc. So if you look for the common causes that we experience in the clinical practice, why people suffer with dissociative identity disorders is basically some form of a trauma, which is very common among the individuals with dissociative disorders. They might have experienced some of the like abuse or unexpected neglect or sometimes even overwhelming experiences, and this generally occurs in the young age or in the like a childhood experiences that they, and it could be a traumatic event which acutely gets adaptive and becomes disrupted later on. So basically, what is the function of dissociation? Why people have this dissociation is it is in the form of a defense mechanism or a coping strategy or a coping mechanism why these people suffer with dissociative disorders. There is various types of dissociative disorders that we come across in psychiatry, like dissociative identity disorders, which previously or commonly is known as multiple personality disorders, or it could be dissociative amnesia, depersonalization or derealization disorders, or unspecific dissociative disorders. So we'll put more focus on dissociative identity disorders, which basically is a complex disorder. There's coexistence of multiple personalities. Primarily, there will be some amount of the loss of memory, and the cause primarily would be a childhood trauma. And as the age progresses, the symptoms gets worsened. It occurs in 1 to 3% of the population, which mainly undergoes underdiagnosis or sometimes gets misdiagnosed with other psychiatric disorders like borderline personality disorders, schizophrenia, psychosis, etc. It mainly affects the middle age between 20 to 35 years of age, and it affects more female gender as compared with the male partner. The first thing we should always try to do if patient comes with such symptoms is to rule out the physical disease or the psychological effects. Like for example, there's a substance abuse or any other reported history or the previous experience of having some therapies like psychotherapies or uses some medicines, etc. So the primary symptom with which you should always probably explore the diagnosis of dissociative identity disorders is there's a disruption of the identity caused by two or more distinctive personality states or a experience of possessions. So at the same time, there could be recurrent gaps in memory. Symptoms could significantly cause distress. Disturbance is beyond the cultural or the religious practices. This is very, very important because sometimes it could be part of our culture. It could be part of our religious practices. So always try to ensure that these symptoms are not part of our socio-cultural practices and they are not attributable to the effects of substance or other medical conditions. So it also could have the dissociative flashbacks, comorbid mental health issues, substance abuse, self-harm, non-epileptic seizures, etc. So again, there could be a lot of genetic causes which could be influenced here, where it is related with the hippocampal or the amygdalar volumes. So there could be environmental factors like detachment from the attachment figure in infancy, some childhood trauma, or unpredictable alteration, abuse, love, etc. And as the age progresses, there is and it is seen that people might have had some amount of physical or sexual abuse before they could develop this dissociative identity disorders. The common symptoms of the patient suffering with
DID includes anxiety, amnesia, hallucinations, delusions, insomnia, low self-esteem, self-harm, somatoform symptoms, and also we have seen patients who also could have the suicidal attempts. So it can have a significant effect on the personal life, especially affecting their marital, familial, as well as the professional relationships. So the dissociative identity disorders, like especially should be differentiated from the other conditions like the major depressive disorders, bipolar disorders, post-traumatic stress disorders, personality disorders, seizure disorders, factitious disorders, and malingering, etc. So the treatment basically has two standard therapy approach. The first one is to assure the restoration, and the second one is the integration into the normal life. There's also the triphasic therapy model, where the first stage is focused mainly on safety and stability. The second one is maintaining stability and resolving the trauma-related emotions. And third one is integrating the multiple identities. So the international longitudinal study, which has been done consisting of more than 292 therapists and 280 patients from 19 countries, which ran for more than 30 months period. Significantly, they say that by doing these therapies, there was a reduction in dissociation, distress, depression, suicidal attempts, and aggressive behavior. And what has been found in this research is that those who are younger will respond better for the treatment and therapies. So even the drugs are administered, like the antidepressants and antipsychotics that block the dopamine and serotonin receptors are used. But only medication do not help or work in case of a dissociative identity disorder. But again, there are some challenges or difficulties in treatment, like each individual develop very unique identities which need to be identified in the clinical practice. The severity of DID varies among the patients, and they definitely need a very personalized, individualized therapies for its management. So how do we approach such patients in Ayurveda? We consider it to be one among the clinical spectrum of Unmada. And as you know, Unmadam Punaha Mano Buddhi Sanya Jnana Smriti Bhakti Shila Chesta Acharam Vibram Vidyat. So there is an abnormality in the mind, judgment, orientation, memory, desires, habits and temperaments, psychomotor activities, personal and social standards. So the basic cause why people develop this personality identity or dissociative identity disorders maybe because of increased status of rajas and tamas, because of prajnaparada, anxiety and delusion are an effect of overindulgence. Very important is the mental trauma. Like ishtasya alabhat, labhasya anishtasya jayate, as mentioned in Charaka Sutrasthana 11th chapter. There could be environmental factors, there could be dietary factors, and there could be the Vega Dharana, which again can be attributable to the psychological dysfunctions. So basically, if you differentiate the etiology of Nija and Agantuja Unmada, we find that the Nija Unmada is related with the doshas, the personalities, and Prajnaparada as the main triggering factors. Whereas the causes are not very clear. Some external unknown causes are attributable to the Agantuja Karana. So proper Samprapti would be like there could be Tridosha, especially involving the Vata, Pitta and Kapha doshas, and the doshas which are involved are Rasa, Rakta and Manovaha, and Dushti Prakara is Sangha. So the basic clinical spectrum of Doshonmada, like where they can be expelled or clearly understood on basic acceptable parameters like dosha, agni, etc. And Bhutonmadas, where it is unknown idiopathic causes could be the clinical manifestation. The onset is very abrupt in case of Nija, and where it could be predominantly
psychological dominance in case of Agantuja Unmada. Even Pururupa also, there is a difference in case of Nija and Agantuja Unmada. And symptoms, very, very importantly, can be specific to a particular dosha in case of the Nija or Doshaja Unmada, whereas it could be like Hinsyartha, Rati, or Abhyarchana. And based on that, there could be different clinical manifestation like aggression, excessive sexual orientation, spiritual sense of understanding, etc. So if you look at the treatment, if it is Nija Unmada, probably we should focus more on Yuktivapashra Chikitsa. And if it is Agantya Unmada, the primary focus will be on Daivapashra Chikitsa. Because Daivam iti adrishtam tat Vyapashrayam Daivapashrayam, where the cause is not clearly known, where the dosha's assessment is not able to, a clinician is not able to assess the proper basic parameters. That is when we understand it as Agantya Unmada, and you try to treat such patients of the dissociative identity disorders through the Daivapashraya and other forms of non-pharmacological treatments. So basically what we try to do in our hospital or in our clinic is based on the dosha dominance, whether they are vata dominant symptoms of dissociative identity disorders, pitta dominant and kapha dominant. You can always plan for the basti, virechana and vamana. Especially the type of basti we do in case of such conditions with vata dominant symptoms like restlessness, too much of insomnia, etc. would be go with basti, especially the mustadi, yapana basti. The various single herbs which are effective in the dissociative identity disorder, especially you should know where do you want to focus as Medhya, Balya, Shamaka, Sanya Prabodhaka, etc. like Jyotishmati, Manduka Parni, Sarpagandha, Tagara. Tagara is very, very effective if there are anxiety symptoms are present. If there are kapha dominant symptoms, vacha plays a very major role. If there are, you want more of a nutritive conditions, then probably you would like to use the Ashwagandha, Bala, etc. So the ideal type of formulation which we try to use is in Vataja conditions, we try to use Kalyanaka and Mahakalyanaka Grita. In Pittaja conditions, use of Kushmanda Grita or Brahmi Grita. And in case of Kaphaja symptoms, Panchagavya Grita and Ma Panchagavya Grita. Very, very important are the role of Sattvaja in the dissociative identity disorders, where it is Ahitebhyo, Arthebhyo, Manonigraha. Like Dhi, Dhairya, Atmadi Jnanam can be adopted. Or even Manaso Jnana Vidyanam, Dhairya Smriti, Samadhi Bihi. So basically we are trying to use all of them in a form of a behavioral and social code of conducts like Ashwanaji Kriya, Manokshobana or Samadhi are the different forms that we are trying to use. So it could be, you can use the Dravyabhuta or the Adravabhuta Chikitsa. So the common treatment plan that you can always advise the patient is do a course of Sadhya Virechana using Ichha Bhede Rasa, like 2 tablets with cold water in the morning, which basically is for Pitta Shamana. Then you can go for 7 days of Pratimashanasya and Dhupana, for which for Pratimashanasya you can use Anutaila, 2 drops in each nostril. For Dhupana, you can use a churna of Kushta, Haridra, Daru Haridra, Vacha and Jatamamsi. And Talam, where you can apply over the head, like especially the Panchagandha Churna and Chandanadi Taila. Mashanasya using Anutaila. And later on you can go with the Snehapana like Tiktaka Grita, Abhyanga using Dhanvantra Taila, Avipati Churna for Virechana 30 grams. And then probably you can do the Shirodhara using the Ushira Kashaya or Ushira Shirapaka. So this is said to be very, very effective. At the same time, you can advise various yoga like standing asanas like Tadasana, Ardha Chakrasana, sitting asana like Vajrasana, Utthana Mandukasana, or different tiger breathing exercises. Prone like Bhujangasana, Shalabhasana, supine like Utthana Padasana, or pranayama, very, very effective like Kapalabhati, Nadi Shuddhi Pranayama, Brahmari Pranayama, and
like especially the meditation, we can go for Akara chanting meditation can be done. And all of them will reduce anxiety and improve the emotional stability. So at the same time, look for the proper pathya and apathya in such patients like kharjura, dadima, leafy vegetables, peya, khichdi, etc. And ask the patients to avoid the food, spices, salt, and vegetables. So these are very, very effective methods that you can adopt in case of the dissociative personality disorders. And these are some of the references that and the various researches that has been done on dissociative disorders. Again, one very good case studies which has been published from the scholars from Ayurveda College and the hospital Kotekal, where they have published one case reports. So many of this information has been taken from this particular article. So once again, I would like to thank Pawan Sharma ji for this wonderful opportunities. And if there are any clarifications or if any more informations are needed, I'll be very happy to answer. Whether our Ayurvedic treatment is useful in dissociative DID? Yes, sir. See, basically, we have to understand the doshic involvements, like whether the symptoms are Vata dominant symptoms are present, Pitta dominant or Kapha dominant. And along with the medicines, I think counseling or the Sattvaja Chikitsa plays a very, very major role. We use like cognitive behavioral therapy, even the age regression therapy. Yes, therapeutic hypnotherapy really are very, very effective. We practice very effectively the therapeutic hypnotherapies are done in such patients because they need to taken into trance and such painful traumas had to be dispelled in the trance level. And if we do at least 3 to 5 settings of therapeutic hypnotherapy, we can be able to manage or effectively help the patients of dissociative identity disorders. And what is the harm for the society by DID patients? See, basically, the harm is that they have their own challenges in the personal life, their familial life, their occupational life, and of course, then it contributes to the society because they are not able to contribute or be productive in terms, and they'll always have the challenges. There will be so much of interpersonal relationship, internal conflicts among the children, wife, etc. And sometimes they have a lot of problems in the workplace because sometimes they are very soft, sometimes they are very aggressive. And suppose today you think that today sir will be very calm, but he becomes suddenly aggressive. So it causes a lot of interpersonal conflicts, and these interpersonal conflicts will make them to lose a lot of their relationship. They are not given a lot of opportunities. Their chances of having the success in their life gets considerable reduction. So it can have a significant effect on the personal life, even sexual life or occupational life, and of course the social life at large. Very right you are. Very right you are. In this case, they have school problems also if this is in young age. So whether we have any plan for counseling of their parents or wife, spouse? Of course, sir. I think you definitely need a family counseling or couple counseling, and especially what happens as per WHO, it is seen that more than 50% of the psychological problems which generally manifest in the elderly are because of some childhood experiences or trauma below the age of 14 years. And that is very, very true in cases of dissociative identity disorders, that they might have suffered with some form of physical or sexual abuse or trauma during the childhood. And very often these trauma are caused by the known people, very close people, known in the family, and they really find difficult to express such traumas to the family members or others. So that is, they have to suppress their emotions, suppress all their feelings, and that suppression. And that is why when we say these are all coming under the Dharaniya Vegas,
Dharaniya Vegas do not mean that they need to be suppressed. We have to ensure that they do not cross the level of normalcy and they do not cause an internal conflict for an emotional dysfunction. Definitely, they do have problem in their daily activities also. Definitely. And if Ayush or Ayurveda can help to reduce those difficulties, we will win the battle. We will win the battle. Yes, sir. Do they have to be eligible for admission or they are in the society only, outdoor treatment? No, I think it depends upon the severity of DID, sir. Like if it is a very initial or mild cases, and especially if they are young and do not have any other comorbidities, they can be managed at OPD level. But if they are elderly, they have severe symptoms and they have other comorbidities, it is always better that they get admitted under the supervision of experts and they are managed at OPD level, at least like 10 to 15 days of management, at least 3 to 4 sittings at a span of 2 to 3 months would be beneficial. So it depends upon the severity, age, and the comorbidity, sir. They are not Unmad Rogi like aggressive or arrogant or with anxiety or beating or hurting themselves. Not like that. So no, it depends upon, because again, there could be, because as you know, there could be shift of the personality sometimes. Sometimes they are very, very aggressive and sometimes they are very, very, very silent or very, very, so it is very difficult. It doesn't mean that they do not go into the sense of aggression. They are people who really, and in such conditions, probably you need some therapies also, like Chirotalam, Sadhya Virechana, Abhyanga, Dhara. They are like, no, and very important, try to get them into confidence, rapport building, and then advising different external therapies are very, very beneficial. So you definitely need a lot of effort sometimes to handle such patients, and they could really have a lot of interpersonal conflicts which need to be addressed at a personal level as well as at the society and the family level. Definitely awareness has to be created to enable to identify them by the parents first. Parents or spouse, that my spouse or my ward is affected with this DID. Very right. Thank you, Dr. Swaz. Thank you very much for your enlightenment to us, because this disease is very rare and we don't know about it much more. So thank you, really thank you for we have, that. I think in the last 6 months at least we have treated three such patients in our hospital. Great. In general hospital, general Ayurvedic hospital, these patients are not seen, but now, they should come to us first. Yes, no, but we have now identified as because we have now approved by the government of Karnataka as a mental health establishment, and people are getting aware of such. And today we have been empaneled by the state government for all the state government employees, and we are now recognized mental health establishment. So today is a very special and happy day for us that we have congratulations empaneled by the state government for all the medical reimbursements. I am there with you on every happy day, because on that day, Baroda, I was in Baroda, my PhD DRC meeting was there. Yes, I am conducting PhD on cannabis, Vijaya Ghan and Vijaya Gharat. So your support is needed there also. Definitely, sir. Thank you very much. Now I would like to request Dr. Nishant Shuklaji. Dr. Nishant Shuklaji, former professor, Gulab Kumar Ayurvedic College, Kai Chikitsa. Welcome. हरिओम, नमस्कार। मैं इस प्रेजेंटेशन में पूरा जो है वो रह नहीं पाया था, तो शायद ये हो सकता है कि कुछ पुनरुक्ति दोष मुझसे हो जाए। DID के लिए जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, आयुर्वेद में इसको कहीं ना कहीं हम
उन्माद के साथ ही जो है ये लेते हैं। पर ये काफी हद तक अलग विषय बन जाता है जब हम मॉडर्न डेफिनेशंस के साथ हम बात करते हैं, और जब हम इसको आइडेंटिटी के साथ हम रिलेट करते हैं तो इससे ये एक पूरा अलग विषय बन जाता है। इस पर जितने डिजीज पर की इंफॉर्मेशन हमारे पास है उससे ज्यादा मान्यताएं हमारे पास है, और इसको इजीएस्ट मेथड रहती है डायग्नोसिस की। शायद इन्होंने ये बताया होगा, मैंने ये मुझे रिसेंटली एक मुझे पिक्चर एक मिला जहां पर ये है कि वांता आवड़े तो आंख पर काफी है। तो you can easily identify by just seeing into the eyes of the patient कि आप जो है वो quickly you will be able to identify the crossover of the identity or multiple identities. Even you can go through the inner psyche, that is what we call as the सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। जैसे ट्रांस की बात की कि हमें ट्रांस में ले जा करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस पेशेंट को हमें ट्रांस में ले जाना है, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें आई एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं एक वीडियो चलाना चाहूंगा। दिस इज वेरी फ्रॉम वेरी पॉपुलर फिल्म which depicts the dual personality. विरह खोल दो, दुख न बैठो, कोई गीत गाओ। And the recent movie, from the recent movie, শুধু যে তোমার there is a changeover in the personalities, a lady transforming into the Manjolika, and there are 3 series of movies. आज तक जो है इसी विषय पर 3 इसी को कंटिन्यू जो है ये होते हुए मूवीज हमने देखी हैं। मूविंग ऑन टू दी डिस्क्रिप्शन, तो क्या है, जैसे हम लोगों ने इन दोनों मूवीज से, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए हमें मूवीज का एग्जांपल लेना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो चेंजेस होते हैं ये नॉर्मल इंडिकेटिव प्रोसेस में जो माइंड की कॉन्शियस है, परसेप्शन है, मेमोरी है और सेल्फ आइडेंटिटी है, ये कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रप्शन होती है। इस फिगर में आप देख सकेंगे कि किस प्रकार से जो है ये एक ही व्यक्ति के 2 अलग अलग चेहरे ये दिख रहे हैं। यूजुअली ये इवन हेल्दी इंडिविजुअल में, साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन हो उसमें भी जो है वो कभी कभार इस प्रकार से बिहेवियर में ये होता है, बट दैट इज नॉट ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन, बट दे आर ड्यू टू द बिलीफ और ये इंटेंशंस है। पर यहाँ पर ये इंटेंशंस नहीं होते हैं, और कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, मेमोरी और आइडेंटिटी ये दोनों जो है ये डिसरप्ट होने लगते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड क्रॉनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक psychopathology closely related to severe, particularly early childhood abuse. ये यूजुअली जो है ये एग्जिबिट होता है इन द मिडिल एज, पर इसके जो रीजंस होते हैं ये यूजुअली चाइल्डहुड में रहते हैं। खास करके 5 से लेकर के 10 साल की उम्र के बीच का जो पीरियड रहता है उसमें इस चीज के सीड्स जो है ये पड़ जाते हैं। और अगर इन बिटवीन कोई ऐसा ट्रोमा हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट का ट्रोमा हो, मदर फादर के सेपरेशन का ट्रोमा हो, कोई और नेचुरल कैलेमिटी का ट्रोमा हो, या फिर किसी भी प्रकार का एब्यूज हो, तो इसके कारण ये हो सकता है। मालट्रीटेड चिल्ड्रंस आर ऑल्सो एट द रिस्क। बच्चों को डांटना, फटकारना भी एक जो है वो मर्यादा में करना चाहिए। एक ये जो है ये बनता है कि कभी कभार माँ बाप अपने बच्चों को इस प्रकार से ट्रीट करते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम ठीक से काम नहीं करते हो, तो बच्चा जो है वो 2 पर्सनालिटी में जो है ये डिवाइड होता जाता है। एक जो है ये पर्सनालिटी इस प्रकार से होती है कि उसको कुछ नहीं आता है, और दूसरी पर्सनालिटी वो एरोगेंस जो है उसमें डेवलप होती जाती। तो ये मालट्रीटेड चिल्ड्रंस में भी ये रिस्क रहती है। Dissociation is a psychophysiologic process that alters person's thought, feeling or actions so that for a time certain information is not associated or integrated with other information as normally is.
हम 24 घंटे में यूजुअली एक ही फॉर्म में जो है ये रहते हैं। हमारी साइकोलॉजिकल और थॉट प्रोसेसेस जो है ये एक ही व्यक्ति जो है ये रहता है, और उसमें फीलिंग्स हो, थॉट्स हो, हमारे एक्शंस हो, उसको कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जो है ये एक ही आइडेंटिटी जो है ये डिसाइड करता है। पर जिन लोगों को ये डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो, वहां पर जो है ये चेंज ओवर जो है ये होता है। कभी कभार कुछ कंडीशन में पेशेंट जो है ये अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को छोड़ करके एब्सोल्युटली अलग जो है ये बिहेव करता है। एक मैं स्टोरी याद कर रहा हूँ। 9th स्टैंडर्ड में हमारी जो है ये एक स्टोरी हमें पढ़ाई जाती थी इंग्लिश में। उसमें एक जो है ये व्यक्ति था जो कि समुद्र में जाने से डरता था, पर जब ये एक फील करता था कि आई एम अ सेलर, तो वो समुद्र उसमें होने वाली हर एक घटनाओं को इतनी ब्यूटीफुली जो है वो डिस्क्राइब करता था। वो समंदर में जो है ये सेल कर रहा हो, वो ट्रेड कर रहा हो, तो ये बिहेवियर उसमें जो है ये आने लगता, वो थॉट्स उसके अंदर आए आने लगते थे। और बाकी के टाइम जो है वो एक इस प्रकार से बनिया था कि जो समुद्र में जाने से भी, उसको देखने से, उसको बात करने से भी जो है ये डरता था। तो ये एक डिसोसिएशन का एक सिंपल फॉर्म के रूप में स्टोरी में जो है ये डिपिक्ट हुआ था। दिस प्रोसेस which manifests along a continuum of severity produces a range of clinical and behavioral phenomena involving alteration in memory and identity. In extreme cases, the process gives rise to, say, a set of psychiatric syndromes known as dissociative disorders. तो इसको हमें जो है ये थोड़ा विस्तार से नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो देखेंगे, पर उसके पहले थोड़ी जो है वो इंडिया में बात कर लेते हैं। मैं इसको रैपिडली जो है वो रीड कर लेता हूँ। Systemic study from India and other developing country assessing the prevalence of PD are lacking. हमारे पास इतने रिकॉर्ड जो है वो नहीं है। Early studies from 1980 reported prevalence of PD in general population ranging from 0 to 2.8% with a weighted mean prevalence of 0.6%. Male gender was significantly associated with personality disorder. Most epidemiological studies conducted in India have systematically underreported the prevalence of sampling bias and other मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज। ये कहीं ना कहीं हम इसको जो है वो क्लियरली इंडिया में समझ नहीं पाए हैं। आज हमारे पास जितना साइंटिफिक एविडेंस इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस काफी कम है। सर ने एक जो है ये काफी अच्छा बताया कि भाई कर्नाटक में ये मेंटल हेल्थ क्लिनिक में ये शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास एविडेंस आने लगे, हमारे पास रिकॉर्ड आने लगे, तो हम इसको जो है वो थॉरोली जो है वो समझ पाएंगे और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट जो है हम कर पाएंगे। जो थियरीज इसके लिए प्रपोज है, जो पर्सनालिटी को चेंज करती है या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर को इनिशिएट करती है, उसमें से कौन कौन सी थियरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल्स हैव इनेट पोटेंशियल टू डिसोशिएट दैट इज रिफ्लेक्टेड इन हिप्नोटाइजेबिलिटी रेटिंग। तो ये हिप्नोटाइजेबिलिटी जिनकी हो उससे हम ये कर सकते हैं। ये सेल्फ हिप्नोसिस से भी हो जाता है कभी कभार, और हिप्नोसिस बाय अदर्स ये करते हैं। कुछ एक जादूगर ये अपने एक्टिविटीज जो अपने शोज करते हैं उसमें कुछ एक लोगों को इस प्रकार से हिप्नोटाइज करते हैं। कितना सही है कितना गलत है, पर ये हमको देखने को मिलता है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इन चाइल्डहुड में डिस्टर्ब पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडिंग टू ग्रेटर पोटेंशियल फ्रॉम साइकोडायनामिक डिवाइडनेस। अगर बच्चे को बचपन में ही ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है। इंडिविजुअली में डिनाइड द चांस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवर बिकॉज कंटिन्यूड इमोशनल और सोशल डिप्राइवेशन। तो ये इमोशनल और सोशल डिप्राइवेशन के कारण ये इनको रिकवरी में आने में ये चेंज या फिर कम हो जाती है। फाइनल प्रेजेंटेशन इज शेप्ड बाय द साइकोडायनामिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर इंक्लूडिंग द साइको सोशल इन्फ्लुएंसेस। तो अगर हम सारे इन चीज को डिसाइड करें तो जो प्रेजेंटेशन होगा, जो हमारे पास जो पेशेंट कंप्लेन करने के लिए आएगा वो अलग अलग रूप से होगा। और उसको अगर डिटेल स्टडी करना है तो हमें भूतोन्माद को हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, या भूतोन्माद के रूप में हमें इसको समझना पड़ेगा। अगर हम चरित्रता की बात करें यहाँ पर तो उन्होंने, और यही जो है ये सुश्रुत संहिता में भी है, यही भाव प्रकाश में भी है कि जब अलग अलग गणों से शरीर
ग्रसित होता है तो उनमें जो उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे देव का देव से अगर ग्रसित पुरुष है तो उसमें जो है वो सिम्टम ओसीडी के जैसे जो है वो मिलेंगे। किसी को आशीर्वाद देता होगा, किसी को जो है ये क्या कहता होगा भाई आपकी जो है वो क्लीनलीनेस को बढ़ाओ, कंपल्सन जो है ये करो। तो ये जो है वो चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। अगर राक्षस से दुष्ट होगा तो उस प्रकार से बिहेवियर होगा, अगर कफ से होगा, कफ डोमिनेटेड होगा तो स्लगिश एक्टिव होगा। तो ये सभी चीजें जो है वो हमको देखने को मिलेगी। सम पेशेंट में ट्रिगर फॉर द डिसोशिएटिव आइडेंटिटी एपिसोड, ये पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव हमको कह सकते हैं, हिस्ट्री दे सकते हैं। सिम्टोमेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो इनमें दो या दो से ज्यादा पर्सनालिटी एक ही इंडिविजुअल में हमको देखने को मिल सकती है। क्लिनिकली वन पर्सनालिटी इज प्रेजेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, द वन ऑफ देम इज डोमिनेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। ये यूजुअली जो है ये रहता है कि भाई एक व्यक्ति जो है वो एक ही पर्सनालिटी को ये एग्जिबिट करता है और बाकी के टाइम में जो है ये जो डोमिनेंट होती है, जो ओरिजिनल पर्सनालिटी वो रहती है, और बाकी के जो है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये डॉर्मेंट पर्सनालिटी एग्जिबिट होती है। वेरियस पर्सनालिटी आर ऑलमोस्ट ऑलवेज क्वाइट डिस्क्रिपेंट एंड ऑफन सीम टू बी अपोजिट। तो ये हम मूवीज में इसको जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से समझाया गया। अगर उसी को एग्जांपल से हम इसको समझना चाहें तो जैसे कि भूल भुलैया मूवी में बताया था कि जो मंजोलिका के रूप में आती है तो वही व्यक्ति जो है वो डांस करने लगता है। जो भाषा उन्होंने सीखी नहीं होती वो भाषा के कुछ एक शब्द कुछ एक एसेंट के साथ वो बोलने लगते हैं। तो ये हमको जो है ये देखने को मिलता है। दिस आर ऑल द बिहेवियर। तो कुछ एक जो है वो बातें पड़ी रहती है वो बिहेवियर के रूप में हमें देखने को मिलती है। ओरिजिनल पर्सनालिटी यूजुअली हैव नो नॉलेज ऑफ द अदर पर्सनालिटी। ओरिजिनल पर्सनालिटी है उसको जो है वो चेंज ओवर हो या फिर डॉर्मेंट सेकंड पर्सनालिटी हो उसका जो है वो एब्सोल्युटली मालूम नहीं होता। तो ये जो भी हिस्ट्री हमें मिलेगी वो पेशेंट के रिलेटिव से मिलेगी। यहाँ पर पेशेंट के रिलेटिव्स को हमें थॉरोली एग्जामिन करना पड़ेगा और उनकी ट्रस्टवर्दीनेस को भी हमें जो है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि पेशेंट को साइकेट्रिक डिजीज हो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक प्रकार से कहानी बनाई जाती है। तो पेशेंट की एग्जामिनेशन और जो पेशेंट की हिस्ट्री दे रहा है उसकी भी जो है ये थोरो इवेल्युएशन करना ये जरूरी बन जाता है। When a given personality is dominant and interacting with the environment, the other personality may not perceive all the happening. Sudden and dramatic transition of the personality, it is often precipitated by stress. कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, एंजाइटी हुई, कोई जो है ये ऐसा इवेंट हुआ कि जिससे मन में निगेटिव भाव उत्पन्न हुए तो ये चेंज ओवर हो जाता है। एसोसिएटेड विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के लिए एक ही मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर बड़ी फैमिली है तो बड़ी फैमिली में यूजुअली ये होता है कि जो सबसे छोटी बहू होती है वो जो है उसको काम करना होता है, सभी घर का सभी काम करना पड़ता है। और जब वो काम करती है तब जो है ये सोचने लगती है, अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है कि मैं अभी शादी करके आई हूँ, मैं अपने घर में जो है वो काम नहीं करती, ससुराल में मुझ पर सभी काम थोपा गया है और मेरे लिए कोई जो है वो आनंद की बात नहीं है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अंदर अंदर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। और जब कभी भी घर में कुछ एक शुभ प्रसंग हो, कोई भगवान की पूजा हो, तो उसमें ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अचानक से जो है वो बाहर निकल के आता है और पेशेंट जो है व्यक्ति जो है ये नाचने लगता है, कूदने लगता है और कुछ जो है वो बोलने लगता है, जैसे कि उनके अंदर जो है वो कोई माता जी आ गया और सब लोग जो है वो ये करके उनको पैर छूने लगते हैं। अब जिनको जो है ये माता जी इस प्रकार से आने लगते हैं तो वो जो है वो उनको घर में जो है वो हमेशा पूज्य मान लिया जाता है। तो ऐसे लोगों में ये सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर कॉमनली हमको देखने को मिलता है। मेजर डिप्रेशन ड्यू टू पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम एंड हिस्ट्री ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट्स, तो ये हमको देखने को मिलता है। फैग्यू स्टेट, स्लीप वॉकिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग में रिप्रेजेंट डिसोशिएशन। ये स्लीप वॉकिंग को हमें इम्पोर्टेंटली हमें समझना चाहिए और इसको हिस्ट्री में इंक्लूड होना चाहिए। चिल्ड्रन विद डिसोसिएटिव डिसऑर्डर एग्जिबिट plethora of fluctuating abilities, moods, fears, anxiety, shifting preferences, inconsistent knowledge, and other
एविडेंस ऑफ इरेटिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स। ये हमको जो है वो इनके बिहेवियर, बच्चों में जो है वो बिहेवियर हमको इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक बच्चा स्पोर्ट्स खेलने जा रहा है और अचानक स्पोर्ट्स में जाने से घबराने लगे, अचानक बच्चा जो है वो ऐसी बातें करने लगे कि जो उन्होंने क्लासेस में जो है वो सीखी नहीं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन may be present. Initial short-term effect abuse include early reaction occurring within first 2 years of termination of accuse. Emotional reaction and self-perception, इसको जो रिसर्च हुए उन्हें मैं थोड़ा बात करूंगा। एडरसन और की टीम ने ये रिव्यू किया था क्लिनिकल चार्ट्स को, और 155 फीमेल एडोलेसेंट सेक्सुअल असल्ट विक्टिम को उन्होंने जो है ये ऑब्जर्व किया था। और जो उन्होंने पाया कि द अमाउंट ऑफ पैथोलॉजी रिपोर्टेड इन डिफरेंट एज ग्रुप, द हायर इंसिडेंस ऑफ साइकोपैथोलॉजी वाज फाउंड इन चिल्ड्रन 7 to 30, जो मैंने पहले ही बताया था। इफेक्ट ऑफ अब्यूज ऑन सेक्सुअलिटी, और ये क्या क्या करता है, इफेक्ट ऑन सोशल फंक्शनिंग को ये इम्पेयर कर देता है। पीपल who have experienced sexual abuse are also found to have problem in social functioning including following: स्कूल डिफिकल्टी, स्कूल जाना पसंद नहीं करता, एग्जाम आते ही उनको डिफिकल्ट लगता है, कोई स्पेसिफिक टीचर या फिर स्पेसिफिक ग्रुप के साथ वो रहना पसंद नहीं करेगा, रनिंग अवे फ्रॉम दी होम, डिलिक्वेंसी, तो ये होता है। अब हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में इसको हम कहाँ पर समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भूतोन्माद एक ऐसा विषय है जहां पर व्यक्ति अलग अलग स्वरूप जो है वो धारण कर सकता है, और उसके आधार पर हमें उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। जितने भी आज तक हमने एस्टैब्लिश किए हैं भूतोन्माद के लक्षण, उनको में हमें एडप्ट करता जाना पड़ेगा, तो हम इस नंबर को जो है वो बढ़ा सकेंगे, और आज हम उससे ज्यादा जो है हम भूतोन्माद को बता पाएंगे। तो क्या बताया, अति आत्मबल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम, तो ये उनमें एक अलग बल होता है, अलग वीर्य होता है, अलग पौरुष होता है, अलग पराक्रम होता है, ग्रहण और धारण स्मरण की शक्ति अलग अलग होती है, ज्ञान की अलग अलग सीमाएं होती है, बोलने की रीति अलग होती है, विज्ञान विशिष्ट जो है ज्ञान उनमें जो है ये होता है। और ये जिन अवस्थाओं में दिन में रात में जो कि भूतों की काल होता है उसके आधार पर ये उन्माद का काल होता है। उसी प्रकार से पूर्णिमा है, अमावस्या है, एकादशी है, तो ल्यूनार चेंजेस के साथ भी ये हमको देखने को मिलता है। अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो अगर पेशेंट में फिजिकल मिल रहे हैं, वो सूखा होता जा रहा है, शुष्क होता जा रहा है, कार्श्य है, पौरुष्य है और उत्पीड़ित है, तो ऐसे कंडीशन को हमें वात प्रधानता को मान करके वहां पर स्नेहपान से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अगर पेशेंट में ताम्र हरिद्र वर्णता है, क्रोध की प्राचुर्यता है, संताप है, तो ऐसी कंडीशन को हमें पित्त प्रधानता मान करके इनमें पहले जो है ये विरेचन करवाना चाहिए। यहाँ पर हमें विरेचन स्नेहपान करके भी करवा सकते हैं, या फिर नित्य विरेचन करके, या फिर सूक्ष्म विरेचन करके भी हम करवा सकते हैं। जैसे कि आरकबद्ध है या फिर त्रिवृत है, उससे हम विरेचन करवा सकते हैं। अगर रोगी में लालास्राव का सिम्टम्स ज्यादा हो रहा है, स्वास्थ्य अन्न नाभिलाषा है, तो ऐसी कंडीशन को हमें कफ प्रधानता मान करके उनमें वमन करवा करके हमें इनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जो मेडिसिन शास्त्रों में लिखी हुई है और उनमें से कुछ एक मेडिसिन मैं यूज करता हूँ, कुछ एक सिजोफ्रेनिया के केसेस में लाभ भी मिलता है, पर ट्रू पीडी या फिर डीआईडी को मैंने अभी तक ट्रीट नहीं किया है। पर इनमें से हम ट्रीटमेंट को इनमें से जो योग है इनको हम ट्रीट कर सकते हैं। ब्राह्मी, कुष्मांड, शंखपुष्पी और कुष्ठ का एक योग बना करके दे सकते हैं। जहां पर वात की प्रधानता है वहां पर हिंगू, वचा, करंज, देवदार, मंजिष्ठा, त्रिफला, त्रिकटु और दालचीनी का योग बना करके हम दे सकते हैं। फिर कफ प्रधानता है तो त्रिकटु, हिंगू, लवण, वचा, कटुरोहिणी, शीरीष, करंज और शर्षक को हम मिला करके दे सकते हैं। कल्याणक घृत है, महाकल्याणक घृत है, सारस्वत चूर्ण है, दशमूल, राशना, वातारी, त्रिवृत, बला और शतावरी को हम दे सकते हैं। और तीक्ष्ण अंजन और तीक्ष्ण नस्य उनमें करवाने की जरूरत पड़ती है। प्रिवेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइमरी प्रिवेंशन इज येट टू बी स्टडीड। तो इनको जो है वो जिन लोगों को हमने एक स्टडी में देखा कि किस प्रकार से
जो साइकोलॉजिकली एब्यूज, चिल्ड्रन एब्यूज हुए, उनको स्टडी में लिया गया। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको ये हिस्ट्री मिली है, अगर पेरेंट्स इसको डिस्कस करते हैं अपने पीयर्स के साथ या फिर डॉक्टर्स के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो इनमें जो है ये, या फिर काउंसलर के साथ, तो इनको प्रिवेंशन, डीआईडी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सपोजेस चिल्ड्रन टू प्रॉब्लम इन पेरेंटिंग। पेरेंटिंग के जो प्रॉब्लम है इनको भी हमें जो है वो देखना पड़ेगा। पेरेंट एंड काउंसलिंग की भी हमें जो है वो जरूरत पड़ेगी। पेरेंटल गाइडेंस फॉर पॉजिटिव पेरेंटल पेरेंटिंग। अवॉइड स्ट्रेसफुल इवेंट्स, जहां तक हो सके स्ट्रेसफुल इवेंट को अवॉइड करना। और रेगुलर मेडिकेशन एंड मेडिटेशन कैन हेल्प टू रिकवर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। इस विषय पर मैंने जो भी पढ़ा है, मैंने जो भी समझा है, वो मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। चिकित्सकीय अनुभव मेरा इस विषय पर काफी कम है, क्योंकि ऐसे पेशेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफी कम ही आते हैं। पर अगर ऐसे पेशेंट को समझना हो तो पहले, जब पेशेंट आपके पास इनिशियल विजिट में ही आता है, तो आप जब उनको और उनके फैमिली मेंबर्स को आई एग्जामिनेशन से, आई कांटेक्ट एग्जामिनेशन से आप करते हो, तभी आपको जो है वो मालूम पड़ जाएगा कि उसके अंदर जो है वो साइकोलॉजिकली क्या जो है वो चल रहा है, क्या उधड़बुन चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। आभार अस्तु। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। मैं आदरणीय रामवीर शर्मा सर से पूछना चाहता हूँ, क्या उनकी प्रैक्टिस में कोई डीआईडी का केस आया? क्योंकि वो तो बचपन से सभी को डील करते हैं। डॉक्टर रामवीर शर्मा जी। यस सर। बड़ा रोचक सब्जेक्ट आपने चुना है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, दोनों ने, मैंने सुना भी अच्छी तरह से, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो जनरल प्रैक्टिस करता हूँ, तो इस तरह का कोई डीआईडी का पेशेंट तो मुश्किल होता है, मगर देखे बहुत हैं। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम लोगों ने, डॉक्टर साहब ने बताया, डबल अपने उसके अंदर जो आइडेंटिफिकेशन होता है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कई महिलाओं के अंदर माता जी आ जाती हैं, कई लोग महिलाओं के अंदर आ जाती हैं, तो उनका जो मानसिक प्रभाव होता है, एक्चुअली ईगो और सुपर ईगो का मामला है। मन के जो भाव हैं सुपर ईगो में पड़ जाते हैं, वो जाके अपने उसमें अंतर मन में जो व्यथा होती है उसको व्यक्त करने का वो भाव रहता है। तो इसमें ज्यादातर जो होती है बचपन से ही होता है। जैसा बताया गया, डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका जो शुरुआत होती है वो होती है बचपन से। और बचपन से माइंड के अंदर कई कारण हो सकते हैं। अब्यूज भी हो सकता है, युद्ध हो सकता है, महामारी हो सकती है, कोई अपना नजदीक का खोया हुआ होता है। तो मनुष्य का आघात जो अपने अपस्मार में लिखा हुआ आचार्य ने, योग अपने मनोरोगों के अंदर अपने अपस्मार और उन्माद में जो कारण लिखे हुए हैं वही कारण है। इसलिए हम आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, भूतोन्माद, जिसमें अपने अलग अलग तरह के रहते हैं। ऋषि उन्मत्त लक्षण भी होते हैं, यक्षोन्मत्त लक्षण होते हैं, पित्रोन्मत्त लक्षण होते हैं। तो डिसोसिएशन जो आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर जो है, विभिन्न प्रकार की उनकी भूमिकाएं होती हैं। अब चूंकि ये डॉक्टर साहब ने बताया कि मेडिटेशन का इसमें जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है और सोशल अपने वो हैं, उनके तो मेडिसिन के द्वारा किया जाता है चिकित्सा। जब मन की चिकित्सा है तो निश्चित ही ये अद्रव्यभूत चिकित्सा ज्यादा रहेगी। मेडिटेशन का भी इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं है इसमें, मेडिसिन का भी इतना रिजल्ट नहीं है। आचार्य नहीं कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं और मॉडर्न साइंस भी कहती है, इसमें सबसे ज्यादा अगर रिजल्ट है तो वो है काउंसलिंग का। काउंसलिंग का वो परिवार के काउंसलिंग और प्लस पेशेंट को काउंसलिंग। कारण क्या निकला, तो कारण के लिए साइकोलॉजिकल इसको कारण निकालना पड़ेगा। उस कारण को जैसे फोबिया निकालते हैं उस तरह से इसको निकालना होगा। और अपने आचार्य ने कहा है तर्जनम, त्रासनम, दानम, हर्षणम, सांत्वनम, भयम। तो जो मनोरोग की चिकित्सा है उसका प्रयोग हम देखते हैं, गाँव के अंदर भी देखा जाता है, पहले भी किया जा सकता था। जिन महिलाओं में इस तरह के देवता आने लगते थे उसको डायन कह देते। हालांकि डायन कहना आज के जमाने में ये असंवैधानिक है। उसको क्या करते थे, तर्जन कर देते थे, उसका चोटी काट देते थे, पीट देते थे। तो उससे उसकी चिकित्सा आयुर्वेद के अनुसार ठीक है, मगर सामाजिक रूप से गलत है। तर्जनम, त्रासनम, दानम, हर्षणम, सांत्वनम, जो चाहिए वो दे दो, सांत्वना दे दो, सांत्वनम और भय भी दिखा दो। तो इस तरह की जो चिकित्साएं अनुवाद में आचार्यों ने लिखी हुई हैं, वही चिकित्सा यहाँ पर मानसिक चिकित्सा, अद्रव्यभूत चिकित्सा ज्यादा काम करेगी। साइकोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा काम करता है आश्वासन, और उसके अंदर आश्वासन के साथ साथ में उसका कारण निकाल के उसके कारण को दूर करना।
ऐसा मेरा मानना है। बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं। तो अपने आचार्य के अनुसार जो उन्माद की चिकित्सा कही गई है उसको किया जाए। मेरी लाइफ में इस तरह के पेशेंट मैंने डील नहीं किए हैं। मैं प्रसूति तंत्र का, स्त्री रोग का करता हूँ, बाकी के जनरल करता हूँ, मगर इस तरह के पेशेंट एक्चुअली आते नहीं है। साइकेट्री का कारण है तो साइकेट्री के पास जाते हैं। और हिंदुस्तान में तो जब पेशेंट पूरी तरह से या तो पूजना शुरू कर देंगे या उसको बांध के रख देंगे, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट हम लोग मानसिक रोगी को मानसिक मानते ही नहीं है जब तक उसको जंजीरों से नहीं बांध दे, जब तक उसको ठुकाई पिटाई नहीं शुरू कर दे। तो इसलिए मानसिक रोग है ये, और मानसिक रोग को मानसिक रूप से ट्रीट करना चाहिए। तो आचार्य ने जो कहा है मनुष्य की चिकित्सा वही सत्वावजय चिकित्सा करनी होगी, और अपने जो उन्माद की चिकित्सा की गई है वो हो सकता है इसमें विभिन्न प्रकार के गलत काम करते हो, ये मुझे जानकारी नहीं है, मगर आचार्यों ने कहा तो निश्चित ही कोई ना कोई काम करता होगा। थैंक यू वेरी मच। इस सब्जेक्ट में मेरा ज्यादा कोई अनुभव नहीं है, जिनका अनुभव है उनका निश्चित ही अच्छा अनुभव होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बिल्कुल सामने स्पष्ट बोला। मैं वैद्य रामावतार शर्मा जी को, रामावतार जी कहाँ गए? हमारे साथ विजय प्रकाश जी हैं। विजय प्रकाश गौतम जी, स्वागतम। मैं आदरणीय रामावतार शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि उनके प्रैक्टिस में कोई डीआईडी का केस आया क्या सर? हमारे प्रैक्टिस में नमस्कार सर को, सभी को। नमस्कार, डीआईडी का नमस्कार। केस क्या है, हमारे कम ही आता है हमारे, लेकिन कभी आया तो ज्यादा चिकित्सा अभी हम नहीं कर पाए, क्योंकि ये ज्यादातर मनोरोग स्थिति का रहता है और मनोरोगी को ज्यादातर हम योग के द्वारा ही ठीक करते हैं। लेकिन ऐसे केस हमारे ध्यान में नहीं आए डॉक्टर साहब, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सर। मैं अब नेक्स्ट वेबिनार शुरू करूंगा। तो आज के कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए आदरणीय लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर को मैं सदर आमंत्रित करता हूं। फिर हम नेक्स्ट वेबिनार हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर करेंगे कि हमारी आयुष मिनिस्ट्री में कितना महत्व है। आदरणीय लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर। गुरुदेव प्रणाम। मेरी आवाज आप तक जा रही है? हरिओम। सुहास सेठी जी पे तो एक मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर हो गया है बेलगावी, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो उनके यहाँ केस आना संभव है। लेकिन जनरल प्रैक्टिस में आयुर्वेद के पास न तो सांप काटा वाला आता, अगध तंत्र वाला, और न इस तरह के मनोरोगी आते। आदरणीय लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर, क्या आप अवेलेबल हैं, कंफर्टेबल हैं? आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो आप बेस्ट कंक्लूजन दे सकते हैं। मैं लिंक चेंज कर